Hello everyone, welcome to the Slate class of physics. As we are studying the chapter of gravitational field, we have just completed the time period of satellite and orbital radius of satellite in the previous video. So in this class, we will do a few questions related to satellite. So here we have a first question in which part A states that state Newton's law of gravitation. ठीक है, आप सबको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट masses को एक्सप्लेन करता है, which is equal to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. So you will write the force between 2 point masses, the force between 2 point masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them, या the square of separation between them. Right? Have a look at this next part. The planet Neptune has 8 moons, satellites, right? Each moon is referred as satellite because satellites are the natural satellites. These moons are the natural satellites, right? Each moon orbits Neptune in circular orbit of radius r with time period capital T. Assuming that Neptune and each moon behave as point mass, show that r and t are related by the equation Gmn equals 4 pi square r cube divided by t square, where g is gravitational constant and mn is mass of Neptune. Right? So here we know that moons are constantly revolving Neptune. Right? So which force is providing centripetal force? Gravitational force is providing centripetal force to all the moons. Right? So जो Neptune का mass है वो mn से show कर देते हैं, ठीक है, और moon का mass is small. Right? So for moon, gravitational force is equal to centripetal force. So you will write gravitational force is equal to centripetal force. Gravitational force is equal to centripetal force. The expression of gravitational force is Gmn m divided by r square is equal to centripetal force, which is mr omega square. Right? Here mass of moon will be cancelled out with mass of moon. Right? और जब cross multiply करेंगे, this r will be multiplied by this r square. Let's make Gmn subject of the formula. Gmn is equal to r cube omega square, where omega is 2 pi divided by capital T. Right? Let's simplify this expression. This will be further written as r cube multiplied by 4 pi square divided by t square. Right? So Gmn is equal to 4 pi square r cube divided by t square. Right? So this derivation was very easy. Let's move on to the part C. The data for the moon Triton that orbits Neptune. So इसका मतलब ये है कि Neptune planet का one of the moon is Triton, and for the moon Oberon that orbits planet Uranus. Now there are two different moons, Triton and Oberon. They are both orbiting different planets, right? And this data is shown in figure 1.1. So the first planet is Neptune. Its moon is Triton, which has radius of 3.55 times 10 raised to power 5 kilometers and time period of 5.9 days. The second planet is Uranus. Its moon is Oberon. Its radius is 5.83 into 10 raised to power 5 kilometers and its time period is 13.5 days. Use your expression in B. B part में याद रहे कि आप ये वाला expression find out कर चुके हैं, right? You have to use this expression in the next part to determine the ratio of mass of Neptune to the mass of Uranus, right? So what expression you have in the previous part, this expression is
GMN is equal to 4 pi square r cube divided by t square. याद रहे कि ये एक्सप्रेशन नेपच्यून के लिए है, राइट? अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं इनकी सेंट्रल एंटिटी सेम नहीं है. फॉर द मून ट्राइट इन द सेंट्रल एंटिटी इज नेपच्यून एंड द ऑबेरॉन मून इज रिवॉल्विंग यूरेनस. तो आप सेम एक्सप्रेशन दोनों के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा मून है, मून ऑबेरॉन, उसकी सेंट्रल एंटिटी, उसका सेंट्रल मास इज यूरेनस. तो फिर आप यूरेनस के लिए भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिख लें, वो भी सेम होगा, सिर्फ मास ऑफ नेपच्यून विल बी रिप्लेस्ड बाय मास ऑफ यूरेनस. द रेस्ट इज सेम, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. अच्छा, अब आपने रेशो फाइंड आउट करनी है मास ऑफ नेपच्यून टू द मास ऑफ यूरेनस. तो आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को सिंपली डिवाइड कर दीजिए. याद रहे कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन के लिए जो रेडियस होगा वो भी नेपच्यून के मून का होगा और टाइम पीरियड भी नेपच्यून के मून का होगा, राइट? और नीचे वाले एक्सप्रेशन में जो रेडियस होगा वो भी यूरेनस के मून का होगा और टाइम पीरियड भी यूरेनस के मून का होगा, राइट? एट दिस पॉइंट वी कैन डू सम सिंप्लीफिकेशंस. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? 4 पाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट mass of Neptune, the ratio of mass of Neptune to the mass of Uranus is equal to radius cube of Neptune's moon multiply by t square of Uranus moon, right? Divided by radius of Uranus moon cube multiply by time period square of moon of Neptune. Now आपने जिस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ नेपच्यून टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ यूरेनस, आपने उसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लिया है. नाउ यू जस्ट हैव टू सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द रेडियस ऑफ मून ऑफ नेपच्यून? इट इज 3.55 इंटू 10⁵, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ 3.55 क्यूब लिख रहा हूं बिकॉज इट इज अ रेशियो, ठीक है? तो रेशियो में आपको यूनिट्स को एग्जैक्ट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. Okay, what is time periods of moon of Uranus? That time period is 13.5, so 13.5 square. Now next up, radius of moon of Uranus. Uranus के moon का radius है 5.83. So 5.83 cube multiply by time period of moon of Neptune, which is 5.9 square. Now, simply substitute these values in the calculators very carefully, right? 3.55 cube multiplied by 13.5 square divided by 5.83 cube multiplied by 5.9 square, right? This is coming out to be 1.18, right? So the ratio of mass of Neptune to the mass of Uranus is 1.18. याद रहे कि आप जनरली रेशियोज को इस तरह डेसिमल्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? So this was an easy question. Let's move to the next question related to satellite. A satellite is in circular orbit R about Earth of mass capital M as illustrated in figure 1.1. सो फिगर 1.1 पे क्या नजर आ रहा है? आपको सेंट्रल एंटिटी नजर आ रही है अर्थ जिसका मास है m. आपको सैटेलाइट नजर आ रही है जिसका मास यू कैन कंसिडर स्मॉल m, और ऑर्बिटल रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल r, राइट? द मास ऑफ अर्थ may be assumed to be concentrated at its center. That's why we call it point mass. Show that time period t of the orbit of the satellite is given by the expression t square is equal to 4 pi square r cube divided by gm, where g is gravitational constant. So once again, हम वही कुछ करेंगे जो हमने previous question में किया है. We will write the expression that centripetal force is being provided by gravitational force. So आप लोग लिख रहे हैं gravitational force is equal to centripetal force.
Gravitational force is equal to centripetal force. What is gravitational force? Gmm over r square. Centripetal force is mr omega square. So mr omega is 2 pi over capital T whole square. Right? Mass of satellite will be cancelled out with mass of satellite. So you have to make t square subject of the formula. एक step में bracket open कर लेते हैं. You will write gm over r cube. ठीक है, ये वाला r दूसरी साइड पर जाकर r square से मल्टीप्लाई हुआ है, is equal to 4 pi square over t square. So now simply make t square subject of the formula. You will write t square is equal to 4 pi square r cube divided by gm. Right? Let's move on to the next part. Part B says that a satellite is geostationary orbit. The satellite is in geostationary orbit, appears to remain above the same point on the earth and has a time period of 24 hours. तो वो जो उसने geostationary satellite की एक condition तो खुद बता दी. He's asking you for the two other conditions, two other features of geostationary satellites. One of them is its direction of revolution is same as the direction of rotation of Earth, which is from west to east. Right? So you will write direction of revolution of satellite. Direction of revolution of satellite is same as direction of rotation of Earth. Direction of rotation of Earth. That is from west to east. State two other features. What is the other feature? This satellite lies exactly above the plane of equator. Right? तो आप लिखेंगे geostationary satellite या geostationary orbit is exactly above the plane of equator. Exactly above the plane of equator. Right? Have a look at next part. The mass of Earth is 6 multiplied by 10 raised to the power 24. Use this expression to determine the radius of geostationary satellite. तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से आप रेडियस को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लीजिए. Radius of geostationary satellite is equal to gmt square divided by 4 pi square whole cube root. याद रहे कि हम exactly ये रेडियस अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ भी चुके हैं और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं. आप में से शायद कुछ स्टूडेंट को ये वैल्यू याद ही हो. राइट? सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. द वैल्यू ऑफ g is 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11. Mass of Earth given है 6 multiplied by 10 raised to power 24. Time period is 24 hours, which is 24 multiplied by 3600 square divided by 4 pi square whole cube root. Right? Let's substitute these values in the calculator to find out the answer. So this is 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11 multiplied by 6 multiplied by 10 raised to power 24 multiplied by 24 multiplied by 3600 square divided by 4 pi square whole cube. And this value is coming out to be 4.23 multiplied by 10 raised to power 7 meters. So this radius is 4.23 multiplied by 10 raised to power 7 meters. Right? In the next part, a global positioning system. बच्चों ये वो वाली सैटेलाइट्स हैं जो कि आपको GPS सैटेलाइट जो आके आपकी लोकेशन ट्रेस करती हैं. गूगल मैप्स पे आप इन सैटेलाइट्स की हेल्प लेते हैं. Orbits the Earth at height of 2 into 10 raised to power 4 kilometers above the Earth. The radius of Earth is 6.4 into 10 raised to power 3 kilometers. Use our answer in B2 and expression t square is proportional to r cube to calculate in hours the period of orbit of satellites. Right?
सबसे पहले आप जीपीएस सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इट्स ऑर्बिटल रेडियस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस इट्स हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। जरा यहां पर देखें, दिस इज अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सैटेलाइट, दिस जीपीएस सैटेलाइट इज प्रेजेंट हियर, दिस इज द पोजीशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट, ठीक है। तो अगर आपने इसकी टोटल ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट करना है, दैट विल बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. फॉर दैट यू विल हैव टू ऐड दिस रेडियस एंड यू हैव टू ऐड हाइट अबव द ग्राउंड. सो इसका टोटल रेडियस के लिए आप दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे. बोथ ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर गिवन इन किलोमीटर, सो यू विल ऐड radius of earth which is 6.4 into 10 raised power 3 kilometers. इसमें आप ऐड करेंगे 2 into 10 raised power 4 kilometers. So 6.4 into 10 raised power 3 plus 2 into 10 raised power 4 kilometers. This distance is 26,400 kilometers. 26,400 kilometers. ठीक है. आपने आवर्स में इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन लिखेंगे विच इज T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब. ठीक है. अच्छा, अब न्यूमिनेटर में जो डाटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, जीएसएस का, और डिनोमिनेटर में आप जो डाटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो आप जीपीएस सैटेलाइट का डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं. याद रहे कि इक्वेशन सिर्फ तब लग सकती है जब ऑब्जेक्ट्स की सेंट्रल एंटिटी सेम होगी. इस केस में ऑब्जेक्ट की सेंट्रल एंटिटी सेम है विच इज अर्थ, राइट. अच्छा, आपके पास ऊपर जो ये डिस्टेंस है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस, ये मीटर्स में गिवन है. सो लेट्स कन्वर्ट दिस इन किलोमीटर्स. दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आपका आंसर किलोमीटर्स में आ जाएगा, एंड दैट इज 42,300 किलोमीटर्स. ठीक है. तो रेशो है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डाटा, इट्स टाइम पीरियड, यू नो इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स. सो 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय time period of GPS satellite square is equal to geostationary satellite का radius cube which is 42,300 kilometers cube divided by GPS का radius is 26,400 kilometers cube. Let's make this T subject of the formula. So T is equal to time period of GPS satellite is equal to 24 square multiplied by 26,400 cube divided by 42,300 cube whole square root. Let's find out the value of time period. So this value is 24 square multiply by 26,400 cube divided by 42,300 cube, and answer is 11.8 hours. 11.8 hours. ठीक है. बिकॉज इट्स ए रेशो, मैंने टाइम को यहां पर भी आवर्स में रहने दिया, मेरे पास ये वाला टाइम भी आवर्स में आया. फर्दर ये डिस्टेंस भी किलोमीटर्स में है, ये वाला डिस्टेंस भी किलोमीटर्स में है. मीटर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत एसेट्स नहीं है बिकॉज इट इज अ रेशो, राइट. एक और बड़ी मेजर बात, वो सैटेलाइट जिसका ऑर्बिटल रेडियस कम है वो कौन सी है? दैट इज जीपीएस सैटेलाइट. तो उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स से लेसर आएगा, एंड दैट टाइम पीरियड इज कमिंग लेस विच इज 11.8 hours. So this is how you apply the concepts of time period on the satellite. In the next video, we will do some more important concepts of this chapter. So stay tuned and do subscribe Slate. See you in the next video. Thank you.